Inshallah, 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 Naya Pakistan, Inshallah. Inshallah, 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 Naya Pakistan, Naya Pakistan, Naya Pakistan, Naya Pakistan. इंसाफ की आवाज उठे, जुल्म की दीवार गिरे, हक बातिल पे हो जाया, हाथ उठाकर मांग दुआ, नया पाकिस्तान. Inshallah, 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 Inshallah. Assalamu alaikum, hello, namaste, sat sri akal, and welcome to Namal College fundraiser this evening. Thank you for coming out. I know it's Ramadan, but it's all for a worthwhile cause. Maria. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। ख़वातीन और हज़रात, हम आपको नमल कॉलेज फंडरेजिंग इवेंट में खुशामदीद कहते हैं और सबसे बढ़कर हम आपके शुक्रगुजार हैं कि माह मुबारक में रमज़ानुल करीम में आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला और इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं। और जी हाँ, हमारी शान, हमारा वक़ार, आमिर खान को हम स्टेज पे बुलाने वाले हैं। So now to share his thoughts on Namal Charity College, I'd like to invite the box who really doesn't need any introduction, and he really is King Khan, and that is Amir Khan. So a big round of applause, please. Let's hear his thoughts about the charity. Man, we're very proud to have in Greater Manchester. There you go. Amir, how are you? Assalamu alaikum everyone. I just want to say Ramadan Mubarak, hope your class are going really well. First of all, I've known Imran a long time. I think it's a great cause he's doing here. He's educating the people in Pakistan. I think that's something that I'm doing. I'm looking into myself. We want to educate the youth in Pakistan, and if you go to this college, which is a normal college in Pakistan, is that, and you get a degree from that, it's equivalent of getting the same degree in Bradford University. So I think it's very good. But yeah, just want to say I love doing charity work. Just like Imran, I went to his hospital. That kind of inspired me to get involved in doing a lot of charity work, because you want to help the people who need help around the world, the poor people. And I want to be one of them guys. I want to use my status into my positive. That's why I've started the Amir Khan Foundation, which is going to be launching on August 14th in Manchester at the Hilton Hotel. So please feel free to come down. But I think you all should. This is the month of Ramadan. I think you all should put your hands in your pocket and donate. Every little bit helps. Every pound is going to make a huge difference. Thank you very much. Right, so how's it going with you? All good? Yeah, everything's going really well at the moment. I'm taking some time out at the moment. I've got a fight in December, so I'm going to enjoy Ramadan off with my family, my friends. We just had a little baby girl came for a while, so spending time with the family. I'm a family man when I'm not boxing. Absolutely. And how is fatherhood, by the way? And do you change nappy? How do I change nappies? No, probably I'll do a lot of nappies. My mum helps her. My mum helps her, teaches her what to do, what not to do. But I know what my parents had to go through. It must have been very hard for them to look after children, when they were being brought up. When we were babies, especially me, I must have been in terror. And that must be really bad. But we get the help as much as possible from our parents, like families and sisters and brothers, so it helps. Okay, lovely. Well, congratulations. Thank you. A big round of applause, please, for Amir Khan. And
I don't know whether Amir remembers him, but we were the first to interview him at Radio Lancashire many years ago when he came in with his... So I suppose now it's time for... टाइम उस वक्त का जिसका आप अभी तक इंतज़ार कर रहे थे, जहाँ जहाँ इमरान खान का नाम जाता है, वहाँ जहाँ पाकिस्तान की पहचान बनती है, पाकिस्तान की पहचान इमरान खान. That's right, thank you, Maria. He, of course, is the Shan of Pakistan. And it's time to hear from the man you've all been waiting for. That's a politician, a cricketer, of course, orator, and a man behind many a charity. Please welcome on stage Imran Khan. Round of applause. Yeah, there we go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ख़वातीन हज़रात, मैं सबसे पहले अनील मुसर्रत उसका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने आप सबको रमज़ान में इकट्ठा किया. रमज़ान में जब लोगों के लिए निकलना मुश्किल होता है, आप सबको यहाँ आज इकट्ठा किया. मैं अनील आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं ख़वातीन हज़रात आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस रोज़े के हालत में आप यहाँ आए. आज का मकसद यहाँ आने का नमल यूनिवर्सिटी, मैं ब्रीफली मैं चाहता हूँ कि सवाल जवाब आपसे हो, ताकि जो भी आप मेरे से सवाल पूछना चाहते हो कि मैं जवाब दे सकूँ. नमल का, क्योंकि आपने मुझे तो वहाँ नहीं नज़र आई डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि हमारा बड़ा शोर था, तो मैं बड़ा ब्रीफली आपको बता दूँ कि नमल यूनिवर्सिटी क्या है. नमल यूनिवर्सिटी पहली पाकिस्तान की देहात में प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी. ये पहली यूनिवर्सिटी है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की. इस पे 90% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं मुकम्मल तौर पे मुफ्त तालीम मिलती है, और मुफ्त ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री नमल यूनिवर्सिटी में मिलती है. 70% पाकिस्तान के लोग रूरल एरियाज यानी देहात में रहते हैं, और इनके लिए इनके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है. बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हायर एजुकेशन सिर्फ एलीट के लिए, आम आवाम के लिए हायर एजुकेशन अवेलेबल नहीं. इसलिए ये एक कोशिश की गई कि क्वालिटी एजुकेशन, जो कि उस पाकिस्तान के हिस्से में जहाँ तालीम बहुत कम है, ये जितना भी पाकिस्तान का मगरबी इलाका है, मियाँ वाली, उसके साथ ही वज़ीरिस्तान, बनूर, दियाई खान, बखर, ये सारे इलाके हैं, यहाँ आला तालीम नहीं मिलती लोगों को. तो ये एक बड़ा चैलेंज था कि हम उस इलाके के अंदर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी बनाएं. क्यों अंग्रेजी क्यों? अच्छा, ओके. मुझे हाथ खड़ा करके, can you raise your hands and tell me how many people don't understand Urdu? सबको समझ आती है, ऐसी जबरदस्ती आप सबको आती है ना? देखिए, मैं फिर से सवाल जब जिसने अंग्रेजी में सवाल करना हो उसका अंग्रेजी में जवाब दूंगा, उर्दू का उर्दू में दूंगा. लेकिन मैं सिर्फ ये कंप्लीट कर दूं कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये कि एक तो तालीम पे वैसे ही जोर दिया जाता. आज तक दुनिया में कोई माशरा तालीम के बगैर नहीं उठा. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के बाद जब सिर्फ मुसलमान गरीब तरीन थे, तो उन्होंने एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर कैसे की कि कई मुसलमानों के पास हथियार नहीं थे, डंडों से लड़े थे. तो उन्होंने जो मक्का के कैदी थे उनको उन्होंने कहा कि पैसे भी ले सकते थे, पैसे लेके हथियार भी खरीद सकते थे. उन्होंने कहा 10 मुसलमानों को जो मक्के का कैदी पढ़ा लिखा देगा वो आज़ाद है. यानी तालीम को तरजीह दी हथियारों में. और वो ट्रेडिशन थी जिसकी वजह से 700 साल तक सारे
साइंटिस्ट मुसलमान थे, दुनिया के टॉप साइंटिस्ट, और इसलिए मुसलमान दुनिया के अजीम सिविलाइजेशन थे क्योंकि तालीम के ऊपर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर चाइना भी जाना पड़े तालीम हासिल करने के लिए तो जाओ। और आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुसलमान दुनिया की जो टॉप 350 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें मुसलमान दुनिया में शायद 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ भी मुश्किल से फीचर करती हैं। और मैं आपको अफसोस से कहता हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज़ कितनी गलत हैं कि एक सऊदी शहजादे ने एक महल बनाया जद्दा में $4 अरब का, $4,000 मिलियन का एक महल बनाया। तो हमारी इसलिए आज हालात मुसलमान दुनिया के ये हैं जो आज पाकिस्तान भी वही उसी बीमारी का है कि जहाँ हम तालीम के ऊपर जोर नहीं देते। तो बहरहाल ये जो भी नमल की एक ख्वाब है और ये इंशाल्लाह बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे और अब तेज़ी से इंशाल्लाह ये आगे बढ़ेगी कि हम एक नॉलेज सिटी बनाना चाहते हैं ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की तरफ। ये इलाका ऐसा है, पता नहीं आपने अगर तस्वीर देखें, इसकी खूबसूरत तरीन इलाका है पाकिस्तान में। सामने झील है बड़ी, पीछे पहाड़ियाँ हैं, खूबसूरत इलाका है। 1000 एकड़ ज़मीन हमने एक्वायर कर ली है। अब इसके ऊपर अब हम शुरू करने वाले हैं अपने हॉल ऑफ रेजिडेंस, और वो एक जो मेरा पैशन है वो ये यूनिवर्सिटी, मिशन पॉलिटिक्स है, पैशन यूनिवर्सिटी। और इंशाल्लाह ये जिधर आज आप खड़े हैं मुझे पूरा यकीन है कि जिस तेज़ी से हमने प्रोग्रेस किया, सबने कहा बन ही नहीं सकती। लोगों ने कहा देहात में PhD नहीं कोई जाएगा। आज 11 PhDs हैं हमारे नमल के अंदर जो कि अच्छी यूनिवर्सिटीज बनेगी। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि हमें ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से हमारी इसकी एफिलिएशन है, हमें हर साल पैसा देना पड़ता है ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी को क्योंकि वो हमें उनकी डिग्री मिलती है नमल में। तो इसलिए जो भी आज यहाँ से पैसा इकट्ठा होगा वो हमारा फ्रेंचाइज को जो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का उसको पैसे देंगे, और बाकी पैसा हम जो भी हमारे स्टूडेंट्स जो 90% जिनको मुफ्त तालीम देते हैं उनकी स्कॉलरशिप पे जाएगा। अनिल अब तक कितना पैसा इकट्ठा हो गया? जी अनिल। 120,000 from the table sales. अभी तक 1,20,000 पाउंड इकट्ठा हो चुका है टेबल से, और डोनेशन से अभी लोगों ने pledges किए। अच्छा, अभी डोनेशन आनी, और हमने ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी को कितना देना है? साल का तकरीबन 2.5 लाख। हमने 2.5 लाख पाउंड देना है ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी को। तो 1,20,000 इकट्ठे हो गए हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि क्योंकि आपको मैं ये बता दूं कि मैं फंड रेजिंग की अपनी सिल्वर जुबली कंप्लीट कर बैठा हूँ 25 साल। तो 1,20,000 इकट्ठा हो गया, और इंशाल्लाह 1,30,000 हमने और इकट्ठा करना है। अब जब तक आपकी डोनेशंस भी मैं अनाउंस करता रहूँगा और आपके सवालों का भी जवाब देता रहूँगा। जी, क्वेश्चंस? जी, कोई किसी किस्म के, देखो मैं पॉलिटिशियन भी हूँ, मैं यूनिवर्सिटी भी बना रहा हूँ, दूसरा शौकत खानम इंशाल्लाह अगले साल पेशावर में खुलने वाला है, तीसरे के लिए ज़मीन ले लिया हमने। तो कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? Dr. Suleiman from Newcastle. My question is regarding KPK, Khyber Pakhtunkhwa. As you know that the province is going through terrible time. Do you have any plans to start any projects like NIML in KPK? Well, at the moment we are in the process of opening the second Shaukat Khanum Cancer Hospital in KPK because the incidence of cancer as a proportion of the population is much higher in KPK than in the rest of the other provinces. So we hope to open the doors of Shaukat Khanum Peshawar sometimes next year, and I can tell you that it will be the most modern and with the latest equipment, the best hospital inshallah in Pakistan. All what we have learned from Shaukat Khanum Lahore we are going to apply in Shaukat Khanum Peshawar, so it will be the best hospital inshallah in the country.
Bradford. Shiraz from Bradford. Khan sir, firstly, welcome to UK and in particular to Manchester this evening. My question is کہ 14 اگست کی اسپیکولیشن بہت ہو رہی ہے. ہمیں سوال کیے جا رہے ہیں ایز پی ٹی آئی ورکرز, کیا 14 اگست کو مارچ ہوگی, اسلامی مارچ ہوگی, کتنے لوگ ہوں گے, اگر ہوئی تو پھر کیا ہوگا, حکومت کرانے کے چکر میں ہے یا کچھ اور ہے. So if you could clear some speculations, thank you. دیکھیں 14 اگست کو اس کا ہم نے نام رکھا ہے آزادی مارچ. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی ڈیموکریسی کو 2013 کے 11 مئی کے الیکشن میں ڈیریل کیا گیا, دھاندلی کر کے. اور اگر ہم نے یہ الیکشن کا سسٹم ٹھیک نہ کیا تو ڈیموکریٹکلی کوئی چینج پاکستان میں نہیں آ سکتا. پھر خون سے تو ہو سکتا ہے لیکن بیلٹ کے ذریعے چینج نہیں آ سکتا, کیونکہ اتنی بڑی دھاندلی کی گئی کہ میں آپ کو سب کو مثال دیتا ہوں کہ ایک ہندوستان میں الیکشن ہوا, ایک افغانستان میں الیکشن ہوا, 2 ہمسایوں میں الیکشن ہوا. ہندوستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہوئے, پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہوئی, جمہوریت مضبوط ہوئی. افغانستان کے اندر دھاندلی ہوئی. آج افغانستان میں 80 لاکھ جو ووٹ کاسٹ کی گئی, ایک ووٹ آڈٹ کی جا رہی ہے. یعنی افغانستان جیسے ملک میں بھی ایک ووٹ, کیونکہ ایک پارٹی میں اگر دھاندلی ہوئی ساری ووٹس کی آڈٹ ہے. ہم نے ان کو 11 مئی کو کہا پچھلے سال کہ ہمیں صرف 4 حلقوں کے اندر ہمیں آڈٹ کرنا ہے. 14 مہینے ہو گئے ہیں, الیکشن کمیشن کے پاس گئے, ٹرائبیونلز کے پاس گئے, پارلیمنٹ میں گئے, سپریم کورٹ میں گئے, کہیں سے انصاف نہیں ملا. انصاف اس لیے نہیں ملا کیونکہ ان کو پتہ ہے جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر 4 حلقے کھل گئے ہیں تو سارا الیکشن ڈسکریڈٹ ہو جائے گا, کیونکہ ریکارڈ دھاندلی ہوئی. اور دھاندلی کیسے ہوئی کہ ایک پارٹی کو 6.8 ملین ووٹ پڑا 2008 میں, اور پنجاب میں صرف پڑا, اور پنجاب کی سب سے بری پرفارمنس ہے تاریخ میں پچھلے 5 سال. اکنامک گروتھ ریٹ, ایگریکلچر, لوڈ شیڈنگ, سب میں سب سے بری. اور اس کو اس الیکشن میں 6.8 ملین سے 14.8 ملین ووٹ پڑ رہا. یہ ناممکن. اس لیے وہ کھول نہیں رہے, اور ہم نے اب سڑکوں پہ جا کے انشاءاللہ اسلام آباد میں آپ سب کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو میں نے عوام کو دیکھا ہے, جس کو سب کو پتہ چل گیا کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پروٹیسٹ ہوگی اسلام آباد میں. 10 لاکھ لوگ انشاءاللہ ہم اکٹھے کریں گے اور سڑکوں سے ہم اپنا رائٹ لیں گے فری اینڈ فیئر الیکشنز. السلام علیکم خان صاحب, میرا نام محمد عاطف ہے اور میرا تعلق کراچی پاکستان سے. کراچی کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے کیا پلانز ہیں. کراچی سے آپ کو الحمدللہ بہت زبردست سپورٹ ملی الیکشن میں, جو کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایم کیو ایم کے اسٹیٹس کو کوئی چیلنج کرے, اور الحمدللہ آپ نے چیلنج کیا. کراچی کے لوگوں نے اسے لبیک کہا, اور بغیر کسی پر الیکشن کمپین کیا آپ کو اتنا اچھا رسپانس. لیکن اس کے بعد سے ہم نے پی ٹی آئی کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی کراچی میں. آپ بھی کراچی نہیں آئے, کوئی اور سینئر رہنما بھی نہیں آئے, اور کراچی کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب آئیں گے کراچی اور کب ہمیں لیٹ کریں گے. تھینک یو. دیکھیے جی, کراچی کو بالکل ہم نہیں بھولے. کراچی کے لوگوں نے جس طرح سپورٹ کیا ہماری تحریک انصاف کا پچھلے الیکشن میں, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کوئی آرگنائزیشن بھی نہیں تھی, اس کے باوجود ہمیں سپورٹ ملی. آپ انشاءاللہ اس کی فکر نہ کریں, پوری تیاری ہو رہی ہے ہماری سندھ اور کراچی دونوں, یعنی اربن اور رورل سندھ کے اندر انشاءاللہ پوری تیاری ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف بڑی تیزی سے پارٹی ہے, لیکن سارے سندھ میں بھی اور انشاءاللہ بلوچستان میں. Manchester, we're here for this noble cause. Let's start donating now. I'm going to start the fundraising, not start the fundraising, I'm going to start my donation. And the agreement is, Anil's going to double mine. Is that fair? Okay. I'll pledge £50,000 for this cause. Come on, Anil. Anil is doing £100,000.
So when one person gets educated from a poor family, he lifts the living standard of the entire family. So this college is very important and your support is very important. Anil, what is the total? We have crossed 400,000. Okay, we have 5 minutes left, and also, Imran, we have a whole group of children, mashallah. Thank you very much. I really want to appreciate this generosity. As usual, Manchester has lived up to its reputation. So thank you very much. Maybe once you get some food down you, then you'll be alright, I think. Some lovely chum tucking into, a bit of feta cheese as well.